So here we are. Hello Hemakshi. Hello Prakhar. Hello. Good evening. Good evening. आप दोनों का स्वागत है आज के विजडम जैम में. Yeah, just happy to have both of you here. Happy to lead into a conversation with two very thoughtful people from where I know both of you. I'm going to take the liberty of introducing you formally and informally both, because that's what I do when there are dear friends and co-travelers. So formally, for most people who are tuning in, they would know most of the work that ISD does. Both of you do. So Hemakshi and Prakhar are co-founders of ISD, which what I remember about ISD is always principled leadership. I think, and Sabarmati Ashram of the 21st century. So those are the couple of phrases that come to me, and really working with the political space. Hemakshi has completed a master's in public admin from Harvard Kennedy, Teach for India Fellow, World Bank graduate scholar, worked with Indus Action and several leadership forums, Echoing Green and Acumen. Wow, Hemakshi, that's nice. And also a very, very perceptive, very, very reflective, questioning person. I think a person who asks great questions. So looking forward to some of that happening here. Prakhar's inspired by Vinoba Bhave, so sharing that very deep resonance, walking across India and committing his life to connecting hearts. प्रखर ये लिव भी करते हैं, शब्दों में नहीं. I think एक connect feel होता है प्रखर के साथ. We go back a long way. 2008 is when Prakhar started Youth Alliance, which is also a very dear organization, a sibling organization, I feel, to BRM in so many ways. And Prakhar loves to make work fun. And Prakhar, I see you as a constant seeker, a person who's always seeking and sincerely seeking at that. So welcome and thank you for receiving this invitation. Thank you for the kind words. We hope that we live them. I hope that we live them. कुछ नहीं तो we'll have a good charcha. I think that's the intent. In fact, let me set this context for this jam and why we thought of this topic and invited both of you for this particular topic. I thought that's probably a good starting point, and maybe from there we can segue in. So we started with wisdom talks, which were more interviews, and then we felt that अगर सचमुच wisdom करना है तो live चर्चाओं में जो wisdom आता है वही fresh होता है, जहाँ there's a dynamic conversation, there is a dynamic interplay between us. So we thought we'll do jams, and then when we said we'll do jams, we also said that we'll invite people with whom we can jam, right? Not only people we can interview. So तो थोड़ा मोड चेंज हो गया, थोड़ा बैठ के चर्चा वाला मोड हो गया. And then we always are on lookout for people amongst our tribe only who are doing interesting work. And I think when we were reflecting, I think one of the things about ISD that struck me or struck us was how it's been able to tangibilize a lot of things. Just felt like a lot of the work of Youth Alliance, ISD, has been intangible. Principal leadership build कर रहे हैं, reflection build कर रहे हैं, और वो भी ऐसे spaces में जहाँ पे काफी tangible election कौन जीत रहा है, कितने वोट मिले हैं, kind of a world. So it just seemed everything from the bags to the vibe of the meet we had, to the preamble, to everything. I mean, I just felt it was manifest, I think, and that showed a lot of thought. So that was my primary curiosity, to start with, saying that invisible को visible कैसे बनाएं. तो उस जिज्ञासा से शुरू करते हैं. तो मैं सोच रहा था कि I think the starting point really is this whole invisible question only, right? Like really engaging with the invisible, the choice of engaging with the invisible, and maybe a little bit about that choice, a little bit about what is it for you to tend to the field, what is it to work with invisible, especially in a space where visible is so valued. Either of you, whoever feels the energy to hop in. Thank you so much. I think it is also good to see some familiar names
Nagesh, Amit, and some other people. Good to see them. Nagesh, it will be good to see your face also. We can make you visible beyond your name. I think if I understood the question right, or maybe just the prompt, I think when we make things visible, so it becomes more real. तो वो जो abstract का idea है उसको अगर हम बात करने और when we name a conversation then it becomes real or when we name something जो subtly हो रही है कई बार जैसे ही हम उसका कुछ नाम दे दें या उस पर कुछ बात करने लगे तो वो बहुत real बन जाती है and I think something that I learned long back was that simple thing not exactly to this topic but the moment people get to know what they have learned their learning strengthens. So there's importance of articulating what I have learned over the last 2 years so that my learning strengthens. Similarly, sometimes it is important to visualize some things which are happening so that it becomes real and it also then becomes part of the culture so that it passes on beyond the couple of anchors who are carrying a thing. तो वो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि कुछ समय तक तो सटली करते रहना चाहिए पर जब हम उसके बारे में बात करने लगते हैं तो इट पासेस फ्रॉम अभी हमारे केस में तो जनरेशंस नहीं है हम मुझे लगता है फर्स्ट जनरेशन ही है और मोस्ट ऑफ अस ऑन दिस कॉल एटलीस्ट 3 of us are first generation only but I think how do we also pass from maybe I am in late 30s to someone who is in mid 20s in the team वो शायद बात करने से पास हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो आई थिंक that's the importance that I felt. Yeah. Want to add something? Yeah. Sure. I quickly add, I think a perspective I have is about learning styles. We talk a lot about learning styles when we're talking about curriculum and as program designers कि हम क्या जो भी session design करते हैं कोशिश करते हैं that we have different learning styles, visual, audio, kinesthetic, etc. And I do think same goes with culture, both internal and external culture, that it's important to, like Prakhar was sharing, for a lot of people, the penny drops when it is spoken about, whether, and hopefully in later in the conversation, we'll talk about some of the examples, but होता रहता है, पर जब तक बात नहीं करते उसके बारे में, it doesn't resonate in some way. So I think, yeah, catering to different learning styles, different exposure styles, वो हम बहुत सीखे हैं कि हमारे programs में, and including the team, we try to get so much diversity, but with that diversity, there is also a responsibility to ensure that everyone's styles and languages are included as we talk about culture and many other things. No, that itself is, I mean, there are several threads already in these. And I think I'm most intrigued. I mean, that diversity thread is also a thread. The examples are also a thread. I think what I felt most intrigued, because both of you are kind of anchors of the organization, leaders of the organization, or voicing and naming things, I think is what I heard. तो जस्ट वंडरिंग कि जब आइडिया मेरे हेड में होता है तब तो बहुत प्योर और एकदम स्मूथ और चिकना आइडिया होता है और जब वो रियलिटी से टकराता है तो वो टूट फूट जाता है क्योंकि रियलिटी इज द द हायर आर्बिट्रेटर ऑफ ट्रुथ आई वुड से तो फिर वो जो there's an attachment to ideas, there's an attachment to the ideal, there's an attachment to how things should be, both at an org level, but also at a personal level, I would say, right? As leaders, I'm sure there are moral questions, there are questions of who I am, and then how does the culture shape me? How do I shape the culture? How do I walk the talk? So curious about what's been the negotiation as leaders who are engaging in some of these collective spaces in terms of embodying culture? What have been those kind of insights, struggles, challenges? Are there any? I can take this one first. लालबाबू आपको देख के अच्छा लग रहा है अगर आप म्यूट कर देंगे तो शायद And if Hindi works better, we can be in Hindi, yeah. Oh no, I mean, yeah, we'll try and mix both. I think I struggle a lot with the idealistic idea or idealistic version of something and there is, to be very honest, also a certain control that I have an attachment towards, that if this idea has been thought of in this way, then वैसे ही implement हो सकता है या that's the most beautiful way to do it.
And for me, it's been a journey to see how so many people add flavors and the beauty to it. I understood this idea theoretically that, of course, when different people give ideas, any idea gets better. But practically, it was very difficult. And it still honestly is difficult for me. अगर कोई भी practice शुरू की है, तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए इमेजिन करना. लाइक हमारे प्रोग्राम के एंड में हम एक मैसेज वॉल बनाते हैं, which I think a lot of people do. It's a ritual that we have, and for me it is important that it is made a certain way. The writing has to be visible, so the art should not take over the writing. The name has to be a certain way. But and it's so I still voice it when the writing of the name is not beautiful or the art is too much. But I've seen such beautiful name sheets come up from the team, and it's what I had never anticipated for it to become a fun activity before the program. It just has the culture is such ke jab bhi kisi ko break chahiye, there's an art corner and everyone is making it. Like in my perfect version of that name sheet, I had not imagined it adding that value to the culture. To be able to see that, to be able to value that, so that my OCD with it becomes lesser, I think a learning journey. And some things also I don't want to give up. So if I have a vision for something and then sharing that vision, not giving up on a certain vision has also, I think, helped and supported, and continuously sharing the why for it. Why is it important that it needs to be a certain way? Yeah. Taka, do you want to add anything? आई थिंक अगर आईएसडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो हमारा काम है आईएसडी भी नहीं, अगर हम जो काम कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इट्स बीन लाइक अ फिनोमिनल जर्नी ओवर द लास्ट 4-5 years फ्रॉम बीइंग इन अ मॉरल हाई ग्राउंड बबल टू हिटिंग द रियलिटी. लाइक यू सेड कि एक आइडियलिज्म जब रियलिटी से हिट करता है तो एक अंतर आता है. एंड फॉर मी आई थिंक लाइक यूथ अलायंस और a lot of I think organizations when we are setting up, हम अपने principles अपनी शर्तों पे बना सकते हैं. There was a choice we made at Youth Alliance. We will not scale it to 20 gram months in a year or 20 Arshats in a year because we don't want to be under certain kinds of pressure. We want to like intact the uniqueness of it. तो वो हमने अपना choice बना लिया. तो हमें फिर थोड़ा easy था कि हम साल में 100 लोगों के साथ काम कर रहे हैं. We uphold our moral values, or rather it became a moral high ground also, which I realized eventually भी आईएसडी का जो काम है वो सेफ गार्डेड हो ही नहीं सकता. आईएसडी का एज एन ऑर्गेनाइजेशन शायद हमारा हो सकता है, जो हमारा संस्था का 15 लोगों के लिए सब भी शायद हो सकता है, बट जो हमारा कोर सेंटर पे एलुमनाई है वो आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, they are engaging with the external world like on a daily basis 24/7, and when they are engaging on a daily basis and when we are also nudging them or asking them or inspiring them or co-creating together for a world which wherein politics becomes that of सर्वोदय, जो काफी अपस्ट्रीम है, तो वहां पे आई थिंक मेरे लिए काफी नेगोशिएशन के नए एवेन्यूज पिछले 2-3 साल में आए. देन हाउ डू आई सी इट? आई एम सिटिंग इन माय सर्वोदय एनक्लेव B117 wherein I can all talk about idealism, I can all talk about Gandhi, Vinoba and the freedom struggle, but जो उनकी स्ट्रगल है वहां पे तो इलेक्शन से 2 दिन पहले शराब बांट रही है. उन्होंने भले 8 साल काम किया हो, रगड़ के काम किया हो, बहुत चांसेस हाई हैं कि अगर वो अपने इलेक्शन लिमिट में ये इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद वो नहीं जीतेंगे. तो अभी आई डोंट हैव द मॉरल राइट टू टेल देम एनीथिंग. तो वो आई थिंक एक बड़ा शिफ्ट आया है देखने का. नॉट सेइंग दैट कि अभी वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, बट वो जो स्पेस था जो चल पहले मॉरल हाई ग्राउंड था मेरे लिए यूथ अलायंस में, आई थिंक इट हैज बीन वेरी हम्बलिंग टू सी कि वो शिफ्ट किस तरह से आ रहा है. Because the external factors are just too many in politics. So I think that's a place where actually personally I am there, is at the negotiating table with myself कि okay अच्छा जी अभी होना क्या है यहाँ पे, अभी how do I respect the person when I know that their intent is extremely powerful but they've done some things in the election which are not right. How do I negotiate that? How do I still call them that they are my friends, alumni, and I engage with them, that eventually maybe when they will be an MLA or an MP, at that time they'll have more power, more space, and their action will be different. So वही एक तरफ एक fundamental principle life का है कि means are
more important than ends. I think that's been a fundamental principle. But now अभी लग रहा है कि अगर end goal वो है तो means का क्या करना है. So I don't have the right answer, but I think वो dichotomy is very strong. I hope I made some sense. Yeah, I mean, you did. I'm also picking up like making peace with certain imperfection, right? I think as we engage in the society, the speed at which we'd like to engage versus what actually happens and the idealism. So yeah, I think what you were sharing, Prakhar, I think I picked up a little bit of making peace or negotiating with what is. And also from Hemakshi, what you shared, the whole organicness of being able to see something that's creating value and then owning it up. And one of the things I've really wondered about this whole question on diversity, because I link diversity in both of what you shared. I think Hemakshi, in what you shared, ke diverse learning styles hai, diverse log hain, har ek jan apna zaika add karta hai. And Prakhar, in what you shared, also the diversity of different means for a certain end, and some people valuing the end more than the means, and अलग अलग तरह के लोग साथ में आकर करना पड़ता है. तो आई थिंक एक प्रश्न मुझे और एक एक्सपीरियंस भी यही आता है कि जब डाइवर्सिटी की बात होती है तो लिप सर्विस पे तो सब लोग हाँ ही बोलते हैं कि ऑब्वियसली इट्स अ नो ब्रेनर कि डाइवर्सिटी तो होनी ही चाहिए. I think for me or for some of our work, there has been a cost to that diversity also, right? The cost of speed, the cost of resonance, convergence. और ऐसी भी जगह आई है जब हमको रियलाइज हुआ है कि भाई ये डाइवर्सिटी तो हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे, हमारी क्षमता ही नहीं है. हमने जोश जोश में डाइवर्सिटी के नाम पे सबको बुला लिया है और अब हमारी गाड़ी चल नहीं पा रही है क्योंकि बहुत जगहों से खींच रही है. So I don't know. So this whole diversity question also for me rise in the realm of invisible, in the sense that there are invisible benefits and invisible costs to diversity, right? And then this judgment of how diverse, like I'm sure you all have set boundaries on किस हद तक हम लोगों को include करेंगे और कहाँ पे boundary रहेगी कि इसके आगे नहीं, या हम कितनी डाइवर्सिटी हैंडल कर सकते हैं, कोई कल्चर कितनी डाइवर्सिटी की क्षमता रखता है. तो what have been those kind of reflections? Have there been reflections? Have there been trade-offs? How's that been like for you? I thought Hemakshi looked like she had something to say. I have something in my mind. That's why I want him to go first, and then I'll have. No, you go. No, I think she'll have similar thing on the mind. This I can say after being so much together. कि जब हमने शुरू किया तो हम एकदम पूरा सारा डाइवर्सिटी सारे प्रोग्राम में लाना चाह रहे थे, पूरी टीम में लाना चाह रहे थे कि हम सब कुछ करेंगे. सारे स्टेट से लोग आने चाहिए और सब अलग अलग लैंग्वेज भी 2-3 होनी चाहिए प्रोग्राम में, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तो हो ही हो, इकोनॉमिक चैलेंजेस और हर तरह के स्पेक्ट्रम से आना चाहिए, ट्राइबल्स भी होने चाहिए, कश्मीर से भी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से भी होना चाहिए. एंड देन आई थिंक 1-2 प्रोग्राम हुए तो हिट किया कि we don't know what is the pedagogy that will work with people who are coming from tribal background. And abhi last Democracy Express, one of the biggest thing that we learned, that I learned was I was standing in a circle, and humor is something that is my integral part of my facilitation. और अगर ऐसे माना नागेश से मैं बोलूंगा नागेश सर्कल में बैठा और मेरा कहने का मतलब है कि खड़े हो जाइए, तो मैं बोलूंगा बैठे ही रहोगे क्या? He will understand that I mean खड़े हो जाओ. But when I say that to someone who doesn't come from my context, my background, who has grown up in a tribal background, and I say that कि बैठे ही रहोगे क्या, तो then that person is just sitting, because वो शायद double meaning जो मैं और नागेश की एक equation है जो शायद बन जाएगी. And I think Abhishek, you will also understand with the tone कि what am I meaning to say. Yeah. And it just landed me in that moment कि my God, this is something the other person can feel bad also. So I am not ready as a kind of a senior facilitator in the team. I am not ready. Or maybe I have to redefine my language. Maybe I have to renegotiate what is there. And many other things, many other simple things की presentation पे कितनी देर, circle में कितने घंटे का हो सकता है, 2 घंटे बैठ सकते हैं क्या? Because I come from a classroom background, college background, तो मैं तो 2-3 घंटे बैठ सकता हूँ. But is that it? तो वो फिर भी हिट किया कि हम कैसे करेंगे, how do we change? Because टीम का भी अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, वो ओवरनाइट नहीं चीजें सारी सीख सकेंगी. तो नाउ आई थिंक वी आर आल्सो फिगरिंग आउट कैसा ठीक है, कितना हम डाइवर्सिटी में कहाँ तक लाइन खींचेंगे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल चैलेंज बैकग्राउंड से कोई आता है तो वो इलेक्शन बेसिक्स कैसे लड़ेंगे. मेंटल हेल्थ का एक बड़ा मुद्दा आया कि वी आर ऑल फॉर इंक्लूजन,
बट हमारी कैपेसिटी नहीं है बहुत ज्यादा होल्ड कर पाने की, जो बहुत एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लग इन करें, काउंसलर्स लेके आए, क्या करें? तो आई थिंक दोज थिंग्स वी आर सेइंग कि हम सब नहीं कर सकते, फिर उसको नेगोशिएटिंग कितना कर सकते हैं। क्या हिमांशी? I think, yeah, you did read my mind. I was going to give some of these examples. और टीम में भी आई थिंक ये बहुत एक्टिव थॉट है, बट एट द सेम टाइम हाउ कैन वी नॉट बी इन कंफर्ट जोन कि जिनके साथ हम इफ वी हैव एन एग्जिस्टिंग पेडागोजी, और वी डोंट ओनली सिलेक्ट पीपल जहां हमें श्योर है कि वो पेडागोजी लैंड करेगी. हाउ कैन वी बी इन अ स्ट्रेच जोन ऑलवेज अ लिटिल बिट सो दैट वी कैन बिकम बेटर, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनली वी आर इन दैट फेज where learning is important to us. So consciously reflecting on it has been something, and there is some or the other voice in the team which will always push. If someone is getting comfortable, or if a few of us are getting comfortable, there is a voice in the team which will say, but that can we push a little bit more here about the boundary that we have set. I'm also thinking from a team point of view. We are a bilingual program and also a bilingual team, in the sense conversations in office are bilingual, but our written language is English. और अभी मैं किसी का हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, I was speaking to someone जो बहुत ही अमेजिंग है रोल के लिए, पर वो इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं है, एंड रिक्वायरमेंट वी हैव इन द टीम इज के मोस्टली दोनों आने चाहिए. And it really got me thinking, like, I barely shared it with anyone in the team. I was like, "Ki kya ho raha hai? वो इतने amazing है, then why am I not feeling ready to say let's move forward this with this person because of English?" पर हमारे सब documents अभी English में है, मतलब session plans English में है, internal communication English में चल रहा है. It's a mental note that I have made for myself, that can we prepare the culture enough to then include that person and be in a little bit of stretch zone and not completely out of the stretch zone. I think mental health is that conversation in the team, that we are really trying to ensure that there is space for all kinds of things people are going through, but at the same time we just don't have the skill inside and the lived experience to ensure we can account for that. So keeping the conversation alive has been, I think, a very active thought, and learning and reflecting from each of these experiences. अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो भी making it explicit कि क्यों अभी नहीं कर रहे हैं, and what will it take for us to be able to do it, and do we want to do it or not as well. Yeah. Yeah, but also I think alongside that, the diversity you're already also dealing with, I think I would be curious on, there's something that cuts across, something about the human experience, maybe something in the zone of metta or love, or I don't know what, cuts across diversities and is not really visible perhaps. And I'm saying that because there is certain resonance, certain connection that gets built across. So I'm just wondering, is there anything like that which cuts across? I mean, for us again, if I reflect on some of these experiences, हम लोग घर पे आर्टिविस्ट आश्रम होस्ट करते हैं, तो क्योंकि खाने का एस्टिमेट करेक्ट लेना होता है, तो कितनी रोटियां कौन खाएगा चेक करते हैं, क्योंकि फूड वेस्टेज मिनिमाइज करने के लिए. बट देन लेटर वी डिस्कवर्ड दैट समबडी फ्रॉम समवेयर आउटसाइड द सिटी एंड आई वाज सडनली शॉक्ड बाय दिस क्वेश्चन. उससे कोई पूछता थोड़ी है कि कितनी रोटियां खाएंगे. इट वाज सच अ ऑलमोस्ट अ रूट क्वेश्चन टू देम. एंड so it was interesting, these kind of छोटी छोटी नोकझोंकों से काफी कुछ पता चलता है, जो ब्लाइंड स्पॉट्स इल्यूमिनेट हो जाते हैं. Even mental health, Blue Ribbon में walking with mental health people meant that we had to make certain choices in terms of what, but still there is something that still keeps things connected. And I'm just wondering if there is something that you've experienced. Have you named it? Have you I don't know, is there something that cuts across all diversities? Is there any तत्व है क्या, कोई ऐसा कोई एलिमेंट आपके पास मिला है या नहीं? देयर आर लिमिट्स टू दैट. आई जस्ट क्यूरियस, आई थिंक ऐसा कुछ है क्या? और अगर है तो आप लोगों ने उसको नेम किया है या लैबोरेटरी में कैटलाइज किया है या कुछ है? आई थिंक कभी ऐसे नेम नहीं किया है. आई थिंक दिस टाइम व्हेन यू आर सेइंग दैट आई एम थिंकिंग, एंड व्हाट कम्स टू मी,
आई थिंक दो चीजें हैं. एक तो जो लग रहा है कि बिकॉज द वर्क इज वेरी यूनिक, देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब बहुत कम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं. तो थोड़ा सेल्फ फिल्टरिंग भी होती है द वंस हु आर कमिंग टू द प्रोग्राम कुछ लेवल पे. तो लार्जर चंक के लिए तो दिस होल आइडिया becomes a very powerful space कि यहाँ पे like this sometimes is the only place in their life जहाँ पे principled politics की बात हो रही है. तो वो भले समाजवादी पार्टी से हो, कोई एनसीपी से हो, कोई कांग्रेस से हो, कोई आप से हो, कोई बीजेपी से हो, बट शायद वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस है क्योंकि मोस्ट पार्टीज में भी बात नहीं हो रही प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की. तो आई थिंक एक वो कॉमनैलिटी बन जाती है और वो सेम टीम के लिए भी बनती है कि टीम को भी एक जगह शायद मिल रही है कि जो पॉलिटिकल स्पेस है देश में वहां पे बहुत लिमिटेड जगह हम प्रिंसिपल्स वाली राजनीति की बात करें तो वो बन जाती है. व्हिच आई थिंक इस पे बात नहीं हुई कि दिस इज अ कॉमन ग्राउंड. दिस सीम्स लाइक वन. आई थिंक सेकेंड is the solidarity piece, at least for the team, that becomes a very strong thing. कि कुछ भी होता है हमारे एग्जाम्पल्स में एलिमनाई की स्टोरी होती है. कुछ भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जैसे आज भी हम ऑफिस में कुछ हम 6 कैपिटल्स पे बात हो रही थी और पूरी फुल टीम के साथ हो रहा था. तो हम एग्जाम्पल सोशल कैपिटल की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एलिमनाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं. पॉलिटिकल कैपिटल की बात हो रही है तो हम एलिमनाई का एग्जाम्पल ले रहे हैं. आई थिंक अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ स्पेस की most people who come in our program come from some challenging background. Either it can be economically, it can be caste, it can be religion. Majority of our cohorts come from some kind of a disadvantaged background, minority, religion, gender. और वो एक बहुत strong sense of solidarity है टीम के सेंस में भी और कोहॉर्ट में भी दिखती है कि दिस इज समथिंग कॉमन. मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ स्ट्रगल इन देयर लाइफ. And I think that becomes like a common language. And there have been instances of breakdown in the cohort also, कि collectively कुछ ऐसा हुआ wherein people are not just emotionally in a different space, but also there's a collective bond which is very visible. और जहाँ पे लगता है कि वो एक common language इंसानियत की बहुत strong बन रही है. तो वो आई थिंक दो चीजें थी जो मुझे एग्जाम आई कैन imagine a lot of scenes coming to me wherein I felt that in the cohort is something powerful happening. But I think these two things seems like more undercurrent connecting each other. Yeah. I don't know Hemakshi, if I made some sense. I was saying no to, I don't want to add anything because you did. And sorry, I do want to say something that was in my mind as Prakhar was sharing, was the sense of ownership. I think anyone who's been in this space after a while, whether it's within the team, it's the team members, or in programs, alumni, I think a sense of ownership, there's something about the culture jahan pe sense of ownership gets distributed. It is very, very visible that ye hum sabka hai. And उससे काफी कुछ अच्छा emerge होता है. Very rarely, I can't remember any time in last 2 years where we've had a conversation about ownership for the organization or work. It's been pretty incredible. And same with cohort. It's almost a given after 5-6 days in any program. The participants and the team will be doing similar things. I connect to all these three themes. I think एक तो पर्पस की कॉमनैलिटी आ जाती है कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है. दूसरा जो इंसानियत जो प्रखर ने कहा, सॉलिडारिटी फ्रॉम दैट. एंड द थर्ड पार्ट आई वांटेड टू अनपैक अ बिट, जो ओनरशिप फील होने लगती है कि अपनापन है, ये हमारा है. और वो आई थिंक इन अलग अलग तरीकों से आप लोग वो अपनापन फॉस्टर भी करते हो, ऐसा एटलीस्ट महसूस होता है कि ये आपका भी है ना, in so many ways. So I was curious about, I think I'm curious about two things. I'm going to zone into them and see if you have to respond. One is we've seen हमारे काम में हर कोहोर्ट का अपना एक कल्चर, सब कल्चर बन जाता है. हर कोहोर्ट का एक सब कल्चर बन जाता है. And I think across batches, you're able to see how these subcultures form, right? I mean, you get to witness every cohort forming its own unique kind of subculture, and you also influence it, but you allow it to form. So I don't know if you, I'm wondering if you, now that you've seen that process, I'm sure you saw it in TFI, I'm sure you saw it in Youth Alliance, like Harik
वो जो जायका बनता है उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स आप लोग ऐड करते हैं, क्या आप होने देते हैं, राइट। एंड द अदर वाज आल्सो कि ये जो ओनरशिप बिल्ड करने का भी जो स्टैंड आप लेते हैं, जहां पे वो अपनापन क्रिएट हो पाता है, राइट। I'm curious about that also. I think that invitations you make, or what really creates that apnapan or that ownership, right? Because it's not everywhere, it's not common. If anything, we get mandates saying org में ownership बढ़ाओ, ownership बढ़ाओ. तो अगर ownership की बात ही नहीं हुई और अगर जी जा रही है, then obviously there's something that's happening, right? So just curious about what yeah, what would that be? I can get us started and Prakhar, please add. I think team में बात करें तो it has been a bane and a boon that we are a very small team. That every person, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो it's very unlikely that the same person is doing the same thing. तो automatically, irrespective, of course, we have levels and there are different salary bands that go, but irrespective of that, अगर कुछ मुझे काम मिला तो सिर्फ मुझे मिला है और मुझे ही करना है. अगर किसी को डिसीजन लेना है कि ऑफिस में क्या हो रहा है, वो सिर्फ उनका ही डिसीजन है. At the end of the day, of course, they take inputs, and that's a culture which has really, I think, responsibility से automatically एक ownership आती है. That I was telling someone, like a team member today, just solve it, like do whatever and figure this out. And because we deal with so many things that are unsolved at a micro and at a macro level, it's exciting space to be, and it's a responsible space to be. So I do think that helps. The bane part is that we're overworked, and we are trying to change that a little bit. That we would like each one of us to have a little less on our plates, so that there is more of work-life integration. But I would say that has helped. And also, I think cherishing, Prakhar can speak more about it because he truly lives it. I think cherishing those decisions and the mistakes that each one of us makes, sharing about it very openly and being okay with it. I don't remember a time when there was any, and I know I have made so many mistakes, financial, non-financial, emotional, but there has been space to talk about them vulnerably and celebrate the good things that have happened, which creates that. I think program में तो मजा है सब साथ में, because team lives in the same spaces as the cohort lives. तो ऐसा बहुत कम चीज है जो distinguish. The team is always up. The team is having fun, dancing together. So there is nothing that distinguishes the team except. And then there are, of course, aspects like all of us sit in a circle. And like Prakhar was sharing earlier, we talk about why we sit in a circle, that it is an equal space, that there is no beginning, no end. We facilitate from different spaces, even when we are standing up. There are peer learning spaces. And I also think introducing Shramdan early on in the program plays a very, very important role in creating that culture, because everyone and the team is also doing the exact same things as everyone. So the boundaries definitely get blurred. We do have a lot of fun together. हमारा एक program सिर्फ online program है, and like you were saying, subcultures तो उसमें भी है. वहां पे हमारे पास श्रमदान नहीं होता, but the chat is always buzzing. People, and it's an all-women program, so people just feel that sense of connection. The content of the program also, right? We are connecting to each other at a human level, including the team. So there is that. I've never had a space to do it, so how can I make the space my own? These are some of the things that I think are very visible that we do, which create that sense of ownership. But Prakhar, do you want to add also, maybe build on Youth Alliance and TFI if you can? So I forgot the core question. I was into your answer more. But Amshi, can you say in like one line shortly, what did you ask initially? नहीं, मैं सोच रहा था हिमाक्षी की बात सुन के भी जो आ रहा है वो मैं पूछ रहा था यही कि ये जो अपनापन फॉस्टर होता है वो कैसे होता है, या कल्चर आपकी आंखों के सामने फॉर्म होता है तो आप कितना छोड़ते हो, कितना होल्ड करते हो, क्या होने देते हो, समवेयर इन दैट जोन. आई थिंक मेरा जो मुझे अपना जो शिफ्ट दिखता है यूथ अलायंस 2011-12 के टाइम से लेके और अब तक, इज दैट कि पहले मुझे थोड़ा एक्ट करना पड़ता था स्ट्रिक्ट, और थोड़ा मुझे था भी, मैं थोड़ा आई वॉज अ लिटिल फिनिकी
about discipline. 5:30 a.m. morning circle है, तो 5:30 a.m. है, you have to be there. 9 a.m. वापस है, उसके बाद श्रमदान है, फिर वापस you have to be there. And the people who were coming उस टाइम पे प्रोग्राम में वो 20-21-22 साल के थे, तो they अभी जब मिलते हैं तो ऐसे उनको भी लगता है कि आप इतना चिल कैसे हो गए हो. Fun was always there, but some things were non-negotiable. What I think adds to is the lightness of the team and the bonding of the team. I think वो दूसरे तीसरे दिन तक उनको लगने लगता है कि सब एक से हैं. While सब एक से नहीं है, उनको 10वें दिन पता चलता है कि सब एक से नहीं है. But by the third, fourth day of the residential, I think all the participants see that there's something unique about the team. And this, I think I've heard time and again, every time, be it at Youth Alliance, be at ISD, कि टीम की, and I think often people ask also कि ऐसी टीम बनाने के लिए क्या करना होगा. And I think what is important is कि उस प्रोग्राम में we don't start on a very serious note, or we don't take program very seriously constantly. But it's a serious program, serious, everything is there. But I think the fun element is constantly there. And because in ISD we work with adults, average age of the cohort is often 35, 36, yeah, 30 plus ही होती है average age. So a lot of people are coming from a place which is anyways उनकी लाइफ में इतने चैलेंज है पॉलिटिक्स में, अभी भी आके एकदम सीरियस कर दें कि नहीं यहाँ से सर्वोदय निकल के निकलोगे और एकदम मामला सीरियस है, तुम्हारे ऊपर ही पूरा संसार का बोझ है, तो आई थिंक उससे काम नहीं चलेगा. तो पहले 2-3 दिन में कैसे लाइटनेस रहे. आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर हमारे फर्स्ट टीजीपी में हमने मानसा में कबड्डी खेली थी, एंड दिस एवरेज एज वाज आई थिंक 35 ओनली, तो 45 साल के लोग भी हैं और 25 साल के भी हैं, एंड and men women साथ में खेल रहे हैं. They come from very different contexts, but साथ में. और ये कबड्डी मुझे इसलिए याद है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं किसी से शेयर कर रहा था कि फिजिकल स्पोर्ट्स से कितना डिफरेंस आता है. And there are people who have not played कबड्डी with men or with women together, but अलग ही मजा था. आई थिंक वो जो कबड्डी खेली थी जब हमने, उसमें 2-3 लोग गिरे भी थे, उनके घुटने भी फूटे थे, खून वून भी आया, और आई थिंक द नेक्स्ट डे फिर रेडी थे खेलने के लिए. Because there's something that happens in those spaces when team is also playing. ऐसा नहीं हो रहा है कि टीम ने इंस्ट्रक्ट कर दिया, now it is कबड्डी टाइम, now you go play कबड्डी. ऐसा नहीं होगा, टीम भी साथ में खेल रही है. अगर डांस हो रहा है तो टीम के जो मेंबर डांस अच्छा करते हैं, हिमाक्षी, अंकित है हमारी टीम में, तो वो उसमें लीड भी करेंगे, डांस भी करेंगे साथ. मेरे जैसे लोग भी थोड़ा अटेम्प्ट मारते हैं. तो आई थिंक वो बहुत से द फन बिकम्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेकिंग इट लाइट. And I think someone shared, Sachin Rao hai, I think Congress ke, he shared one thing, ki the least we can do when they move out of the program is validate their choices, because no one out there in the world is validating their choice of joining politics. सब बोल रहे हैं कि क्यों किया है. So the least we do in a 10-day residential is make sure कि वो बाकी सब तो सीख ही रहे हैं. When they move out, they feel that what they have chosen is of very high importance. That happens through little lightness, little fun. So I think वो मुझे लगता है कि उससे बहुत अंतर आता है. बढ़िया. Yeah, that's a delicious answer, I would say. I think what I'm picking up also is perhaps that teams need to let go of the need to feel special or powerful, right? Like I feel things like Shramdan or having fun together are very equalizing forces. और जब तक वो फैसिलिटेशन के रेल में, उसमें तो फैसिलिटेटर पावर वाले स्पेस में है ही, खड़े रहो बोलेगा तो सब खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ ऐसे बैठ जाते हैं. बट आई थिंक कबड्डी में बराबरी का मामला हो जाता है, या फन में I think I'm getting in touch with the equalizing forces of some of this, which kind of balance that specialness. और ऐसा लग रहा है almost paradoxically at the end of that process, वो जो स्पेशलनेस है टीम की वो इनेटली विजिबल हो जा रही है, अलग से बोलना नहीं पड़ रहा है कि ये स्पेशल अलग टीम है. एंड so I think that's something that I'm kind of picking has happened, or I think it's been थोड़ा effortlessly हुआ है, या effortfully हुआ है. I think that's where I'll go next. But yeah, I think and this why piece that I think Hemakshi are again and again saying, that clarifying the why behind each thing also all the time, so that everybody is on board. I think that's also something that I'm definitely picking up. What the contrast I'm also picking is that जैसे blue ribbon kind of organization में, क्योंकि डिसीजन सर्वानुमति से होते हैं, तो ऑलमोस्ट रिवर्स हो जाता है कि एवरीथिंग बिकम्स एवरीबॉडीज बिजनेस.
which is a luxury which is an intellectual luxury, because you're trying to understand everything, be generalists and all. And that pathway to ownership has been interesting in a different way, that there is a collective kind of ownership. At the same time, the luxury is not having too much of having to deliver on outcomes, right? In some ways, it's closer to Youth Alliance in the sense of my own growth is kind of the work. And I think just holding that reality that organizations which have to deliver very clearly on certain external outcomes apart from individual growth have then to find these aspects or these ways by which that happens. मुझे जो प्रश्न आ रहा था वो मैत्री और सिद्धांत का था, क्योंकि प्रखर को तो मैं पहले से थोड़ा बहुत जानता था और उसकी जर्नी भी रही है, वो सिद्धांत से मैत्री और दोनों को होल्ड करना, आई एम श्योर जो कल्टीवेशन डेवलप होता है टीम में, वो भी आई एम श्योर थ्रू पर्सनल प्रैक्टिसेस और एम्बॉडीमेंट वर्क. और सो जस्ट क्यूरियस अबाउट हाउ दीज play out in your culture, how strongly siddhants or principles are held, what are the collective norming हो रहा है या understood है, और कहाँ सिद्धांत कहाँ मैत्री. I've always wondered in organizations किस तरह वो मतलब in proper and by proper organizations I mean organizations that have very clearly put skin in the game, which have put an accountability out there beyond just individual transformation, right? That's at least how I see ISD. Right, putting that skin out there means that there is deliverables, there's accountability. So just curious, how does this मैत्री सिद्धांत ये इसका इंटरप्ले होता है, किस तरह होता है, इंटेंशनल होता है, सहज हो जाता है? I have a joke, and because Prakhar will have a real answer, and then maybe I'll add. But the joke is the formula is to have two very different people sow the seed of the organization. And I think like it was in the early stages itself that we started having the interplay of Maitri and Siddhant. But that's just a joke. Prakhar can give a real. Yeah, but कौन मैत्री है कौन सिद्धांत है ये आप हमें guess करने You can दे रहे figure out. Guess कर सकते हो. बढ़िया. हेमाक्षी मैत्री है, मैं सिद्धांत हूँ. Okay. I think अच्छे, आई थिंक और हमें नॉन लाइव स्ट्रीमिंग और भी जैसे जैम करने से तो बढ़िया सवाल सोचने को मिलेंगे, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू थिंक आल्सो एज वी आर लाइक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और एनी कम्युनिटी आल्सो, एंड ऑल ऑफ अस, आई थिंक बाकी लोग भी जो यहाँ पे हैं. आई थिंक यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर, अभिषेक, जो आप बोल रहे थे कि बीआरएम में शायद एक्सटर्नल आउटकम का उतना वो नहीं है, रिलेटिवली आउटकम तो फॉर श्योर है ही है, तो सर्वानुमति की स्पेस बढ़ जाती है. एंड आई थिंक सिमिलर आई वुड से यूथ अलायंस में भी रिलेटिव वो चॉइस वैसी है ऑर्गेनाइजेशन की कि रिलेटिव आउटकम का उतना वो नहीं है, और हर एक टीम मेंबर की इंडिविजुअल जर्नी इज ऑल्सो वेरी सैक्रोसेंट. तो वो आई थिंक अभी जहाँ पे हम हैं जिस स्पेस में है, एक तो बहुत नई चीज है, तो हमको टीम मेंबर भी ऐसा नहीं होता है कि कोई ज्वाइन करे और उनको पता है पॉलिटिकल लीडरशिप पे काम कैसे करना है. तो ऑटोमेटिकली काफी हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक की टीम मेंबर्स की जर्नी, और जो आज का फेज है जिसमें 8-9-10 महीने से 1 साल इज सीन एज अ गुड टाइम गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन. 3 साल कोई काम करता है, 2-3 साल तो टेन्योर्ड हो जाता है लैंग्वेज में. तो अभी जो मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे लगता है कुछ उठाया है तो 5-7 साल 10 साल तो करना चाहिए, बट आई ऑल्सो दैट डजंट मीन दैट आई डोंट रिस्पेक्ट समवन हु हैज गॉन इन 1 ईयर, दैट्स देयर. तो उसमें समय बहुत लगता है. तो वहां पे अभी वैसा है कि हमारा अभी काम है बहुत सारा पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी जर्नी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनकी जर्नी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें हम कैसे कुछ ऐड कर सकते हैं. तो इसलिए सिद्धांत थोड़ी जरूरी है इस पूरे उसमें. एंड इट हैज बीन अ स्ट्रगल फॉर मी आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस, टू नेविगेट दिस. आई वुड नॉट से कि इट हैज बीन, आई थिंक समटाइम इट्स स्टिल इन अ स्ट्रगल, बिकॉज नेचुरल टेंडेंसी जो आ जाती है वो आती है कि इंसान, और वो जो मैत्री वाला है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जब उसकी मेरिट दिखने लगती है टीम को कि क्यों ये जरूरी है प्रिंसिपल्स या क्यों ये जरूरी है पॉलिसीज, तो आई थिंक शायद कुछ बदलता है. और वो उसके एटलीस्ट उसमें तो एटलीस्ट माय लेंस टू डू दिस इज दैट कि पॉलिसीज विल बी इम्पोर्टेंट, वो सिद्धांत इम्पोर्टेंट रहेंगे, बट कैन वी हैव मैत्री एज अ फाउंडेशनल थिंग फॉर पीपल वर्किंग टुगेदर. एंड दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स. आई थिंक
the way we are saying sometimes difficult things also changes the dynamics. हम उस बात को कह कैसे रहे हैं, अगर हमको सिद्धांत को भी लागू करना है तो जैसे मेरा लार्जर जो एक ऐसे कोई पूछता है 370 में क्या आपको आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसमें क्या मसला है, आई एम सेइंग टेकिंग अ पॉलिटिकल एग्जांपल, तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा मसला नहीं है 370 हटाया गया कि नहीं हटाया गया, अचानक से जो हटा के इंटरनेट बंद हुआ वो मेरे लिए मसला है। आप 370 आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मुझे नहीं पता कि 370 हटाया गया नहीं हटाया गया, उसमें थोड़ा मेरा ओपिनियन हो सकता है, मैं पढ़ूंगा तो शायद समझ में भी आ जाए, बट जिस तरीके से चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भी लगता है कैन बी ब्यूटीफुल डांस बिटवीन सिद्धांत एंड मैत्री, उसका इंपॉर्टेंस अगर एक्सप्लेन किया जाए, मेरे लिए आई थिंक मैत्री लाने के छोटे छोटे तरीके, आई थिंक आई रिलाई ऑन फन एंड लाइटनेस एज अ सेंटर ऑफ बिल्डिंग अ कल्चर। तो अक्सर ही सुबह 10 बजे आई वुड बी सीन इन किचन मेकिंग कॉफी फॉर 5 पीपल, और वो मेरे लिए अभी से नहीं आ रहा, आई थिंक मेरा 12 साल का कल्चरल बैगेज है कि मैं ऑफिस जाऊंगा पूछूंगा ज्यादातर लोगों से, 2011-12 में शुरू कर दिया था और वो अभी तक चल रहा है कि आई विल आस्क पीपल एंड मेक अ कॉफी फॉर एवरीवन। तो इट ऑल्सो चैलेंजेस द बैरियर की कॉफी बनाने का काम छोटा काम, और जो कोई 30 साल का ऑफिस ज्वाइन कर रहा है माना कोई एडमिन एसोसिएट के रूप में या एसोसिएट, तो उनके लिए भी बदल जाती है परिभाषा कि अच्छा ठीक है ये को फाउंडर है संस्था के या जो भी टैग लगा है वो भी वो करते हैं, आई थिंक वी ऑल डू दैट आई थिंक। और उससे क्या हो गया कि हिमाक्षी कैन आस्क मी प्रखर मेरे लिए भी कॉफी बनाना, आई कैन आस्क हिमाक्षी कॉफी बना देना, फिर समवन हु इज लाइक मे बी 12 इयर्स यंगर, क्योंकि एजेस सोसाइटी है हमारी, शी विल आल्सो हैव द करेज टू से कि हिमाक्षी मेरे लिए भी एक कॉफी बना देना, प्रखर मेरे लिए बना देना। तो आई थिंक दैट डज सम, दीज आर वेरी स्मॉल नुआंस थिंग्स बट दे डू समथिंग टू द लार्जर स्पेस। तो वो आई थिंक एक था जैसे मेरे लिए आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट हिमाक्षी ने एक बार शेयर किया था, और मुझे ऐसे लगता है सेशन जैसा भी हो बट रंगोली अच्छी बननी चाहिए, मेरा फंडामेंटल बिलीफ है कि जो सेंटर पीस है वो अच्छा बनना चाहिए सेशन। और आई थिंक दिस टाइम आई वाज शेयरिंग विद द टीम कि रंगोली के डिजाइन जैसे हम सेशन प्लान तैयार करते हैं वैसे रंगोली के डिजाइन तैयार करने चाहिए, क्योंकि सेशन अगर इम्पोर्टेंट है तो सेंटर पीस भी इम्पोर्टेंट है, वो नेम टैग भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट एड्स वैल्यू, इसका हमको इमीडिएट आउटकम नहीं आएगा। तो वो आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें हैं, और हमने बात करी बैठ के रंगोली क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे क्या होगा, जब शुरू में ऐसे लगा कि ऑटोमेटिकली नहीं समझ में आया तो हमने बैठ के बात करी, एंड आई थिंक स्पेसिफिक रिमेंबर जो हमारा टीजीपी का पहला रेजिडेंशियल हुआ था उसके तीसरे या चौथे दिन हिमाक्षी शेयर्ड विद द टीम कि प्रेफर वुड नॉट से एनीथिंग फॉर एनीथिंग एल्स बट रंगोली अच्छी बनाना, दैट्स हिज ओनली पेट पीव। क्योंकि मैं हिचकिचा रहा था बोलने में, शेयर्ड में धर के रंगोली अच्छी नहीं बन रही है 3 दिन हो गए हैं, एंड देन शी शेयर्ड विद द टीम की रंगोली अच्छी बनानी चाहिए। तो दो वेरी लिटिल थिंग्स आई थिंक, बट आई थिंक दोस थिंग्स चेंज समथिंग। और मुझे आज भी रंगोली का अलग पैशन है कि वो सेंटर पीस बहुत प्यारा बनना चाहिए प्रोग्राम। Sorry, Makshi, you want to add something? I gave a long answer. I lost internet for a little bit, but no, I think you covered. Yeah, I think I'm hearing also this richness of choti choti cheezein, in the sense it's the topic of the conversation was how do you make the invisible visible. I think one of the things I'm picking is these small things that especially anchors insist on, right, are not actually that small perhaps, and they're actually way more profound in the sense. आई थिंक ये अक्षत और मैं बीआरएम में अर्ली डेज में चाय हमेशा हम ही लोग लाते थे, उसमें वो या मैं ही लाएगा ऐसा हमारा प्राइमरी नॉर्म था, जस्ट बिकॉज वन इज आई लव टी बट द अदर वाज आल्सो इट जस्ट ग्रेजुअली सेट, इट वाज द थिंग फॉर अस टू डू इंटेंशनली, and just the small act and its effect on equalizing power, I guess, right? Like we're constantly projecting power onto leaders, or we're constantly assuming things, and I think just some of these small things, or even rangoli, I think just it doesn't count or add up to anything in very tangible ways, but the insistence on that small action and what are the invisible ripples of a good rangoli, kiske dil ko kis tarah chhu jaye wo measure to nahi ho sakta, but I think to that extent I also feel ke since I would say we're influenced by kind of the Ahmedabad Sugard Mood by Love space, Jayesh bhai, and that whole field on how those little things are. I just remembered Jayesh bhai ko bhi one of the early times when I saw him was arranging chappals, and such a counter image from what I thought of him when I saw him. So I think just getting in touch with how in small ways Maitri, in small ways things happen, and build that invisible field,
and how much, I guess, different ways we ignore that in pursuit of big things. I feel like the big stuff is the cool stuff, the sexy stuff, the like principles and so on. The small things are what start getting left out in the pursuit of the big. I think that's what I heard when I heard. Yeah. मुझे आई थिंक जो बिग स्टफ होगा ना वो तो छूटेगा ही नहीं. वो Hmm. उसमें हम समय लगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे हम सेशन कर रहे हैं तो उसकी तैयारी तो हम दिसंबर से करेंगे अगर वो मार्च में होना है, बिकॉज वायर्ड लाइक दैट, क्योंकि हमें पता है उसका एक आउटकम इमीडिएट है. जो भी चीज का इमीडिएट आउटकम होगा वो शायद नहीं छूटेगा, वो होगा ही होगा. जो इनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड टू मेक सेंस ऑफ दिस सॉफ्टर थिंग्स इज, वो हमको उसमें थोड़ा लैग बना दी. कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस वेलकमिंग एनवायरनमेंट से क्या होगा. देयर मस्ट बी सम साइंस, किसी ने रिसर्च कर दी होगी. एटलीस्ट मुझे पर्सनली नहीं पता कि उससे एग्जैक्टली क्या होगा. तो फिर वो ज्यादातर फिर वो दिखेगा नहीं. दिस लिटिल थिंग. हम डेमोक्रेसी एक्सप्रेस करके एक प्रोग्राम करते हैं, 10 दिन का ही प्रोग्राम होता है. हम गुलबर्गा में थे एंड 5:30 मॉर्निंग सर्कल हुआ, और फिर उसमें आई थिंक 6:15 पे वापस आके लार्ज ग्रुप होना था. तो उस पर्टिकुलर डे पे मॉर्निंग सर्कल में पीपल हैड अ क्वेश्चन एंड दे हैड टू गो फॉर लाइक 30-40 मिनट वॉक एंड देन कम बैक. आई थिंक इट वाज 6 or 7 days, आई डोंट नो, मे बी 5th डे. उससे पहले 5 दिन पार्टिसिपेंट सॉ दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंटरपीस, रंगोली बनती है. Beautifully, what happened that multiple participants just brought flowers with them when they came back, and they made a centerpiece automatically. एक दो ने उसमें लीड लिया, बट सबने अलग अलग कुछ रख, किसी ने एक स्टोन का पेबल रख दिया, और जो आसपास फूल पड़े थे, और गुलबर्गा के हम एक अच्छे से कैंपस में थे, वहां पुराने पेड़ों के रात में जो फूल गिरते हैं. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैरी विद देम, व्हिच वी नेवर सेड दैट कि आपको रंगोली बनानी है, आपको बस वॉक पे जाना है, सोलो साइलेंस. But when they came back, they bought flowers, they made a beautiful piece. And I think, Hemakshi, if you correct me, I think each one of them contributed to that. Something or the other. It was one of the most beautiful rangolis that just happened without one architect or a designer. I still remember it, yeah. Wow. और वो अपने आप हो गया, किसी ने नहीं उसे डायरेक्ट किया था. और ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बहुत प्यारी रंगोली बनी हो, पीपल डोंट गो एंड वॉक एंड सी इट. पीपल, और कुछ लोग तो जरूर से जाते हैं जो उसके पास खड़े होकर उसको देखेंगे कि क्या बना है, कैसे बना है. एंड आई थिंक दैट विल अनलॉक समथिंग विद इन आवर हार्ट व्हिच वी डोंट इवन नो. मे बी दैट विल अनलॉक ओपननेस or receptiveness to a difficult conversation. I don't know how to put words also what it will unlock. It will unlock something, yeah. Yeah. I also will quickly add that the circles, the centerpiece, so many of our alumni have started doing similar programs in their own contexts, and they share pictures. There is a centerpiece. They're sitting in a circle. They're welcomed with a heart. So just those small things have a way of going. I think you shared something about the preamble. So one of the things that we do is when a speaker comes, they get a preamble. They sit on the same chatai as everyone else in a circle, and like everyone else, if they have a leg issue or a knee issue, they get a chair. It's the same chair. There is no special chair. There's no garland. And we make this very explicit on third or fourth day that are you observing that we're not, aise nahi bolte, are you observing, but that we give the preamble for the same reason. We do not give flowers. We do not ask them to sit in a special place. There is no podium from which they are addressing, because politicians at the end of the day are people. They are like us. How do we treat them as someone who has the responsibility to make the constitution come alive as well, and not God or the culture that exists in India. And our alumni have started doing that in their programs. A lot of them actually send pictures and contexts and ripples. I mean, rather than scaling or thinking scale, this rippling is also such a non-linear way of thinking. And just from beauty, I think for me also, being with Suruchi, my partner, she is also totally into beauty. I mean, almost like I realized that her pathway to, there's like the truth, beauty, goodness hota hai, Satyam, Shivam, Sundaram. Or wo uska access to that trinity is through beauty. And how that creates a space at home which does its own magic. So so really connecting to that. But also mindful, actually, we're just warming up to our conversation and we're already like 5 minutes to 8. So just feeling, just present to
the fact that अभी तो शुरुआत ही हो रही थी, अभी तो हम सरफेस से थोड़ा गहरा जा रहे थे, but also mindful of time. So just pausing to check in with what's coming up for each of you as we near our pause. I'm calling it pause because फिर मिलेंगे, फिर बातचीत तो आगे चलती रहेगी, but फिलहाल just to honor the time boundary, just curious where you are, what's I can share. I think where I am, and as I was also sharing and listening, um, I just feel so much gratitude to organizations that have taught us. I think definitely moved by Love Ahmedabad Space, Youth Alliance, TFI, me have played a big role. So that sense of gratitude is towards those organizations and people is the most alive in me, because I was sharing this before we started recording that this doesn't come naturally to me. And I am one of those people who needs to be taught, who needs to be told these things. And I feel very grateful that I've had people and organizations who told, taught, made these things visible to me and made me experience it for me to even play a role in carrying that forward. So that sense of gratitude is the most alive in me. I think I was very happy to see Nagesh over here with the camera on, and I think yeah, I think I saw Nagesh you multiple times during the last 1 hour. So thank you everyone, but I don't know, it felt like saying thank you to Nagesh for being here. एक तो आई थिंक ये था, बाकी आई थिंक वेरी सिमिलर टू हिमाक्षी जो बोला कि इतने सारे लोग और इतने सारे तरीकों से जो हमने सीखा है, लॉट ऑफ मेंटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस. आई वाज सेइंग कि शाम को मेरी किसी से बात हो रही थी, एंड आई वाज सेइंग कि सेल्फ मेड इज द worst possible lie in the world. There is no one called self-made. It is multiple forces that make us, multiple people. और अगर कोई बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है सेल्फ मेड, आई एम सेल्फ मेड पर्सन, नो वन हैज कंट्रीब्यूटेड टू माय सक्सेस, तो थोड़ा सोचना चाहिए. मतलब हो सकता है लोग भावुक होके बोल दें, इमोशनल होके, तो कोई बात नहीं, but there is nothing called self made, and I think that's what is coming to me, कि whatever we are talking, whatever we are sharing. And Himakshi said a very beautiful line that people have made us experience this, and because they made us experience, our belief went up. तो लॉजिकली शायद नहीं पता आया चला होगा शुरू में, और अभी भी बहुत चीजें नहीं पता होंगी, बट बिकॉज आई एक्सपीरियंस एंड इट वाज गुड, वी स्टार्टेड डूइंग इट. एंड फॉर मी आई थिंक अ लॉट ऑफ लर्निंग आल्सो हैपेंस थ्रू इमिटेशन. I believe that I'm a good follower also many times, not always, but many times, and I think that has taught me. So I think wo hai a lot of great gratitude to the people and places who have held those subtle small practices. And yeah, and thank you for holding these conversation, which also connected me to these things which we don't talk very often. So वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये किया कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज सोचने से मेरी भी अपनी समझ बढ़ती है जब हम बात करते हैं उसके बारे में. When we name it, it becomes stronger, it deepens. Yeah. I also, thanks for this. I also got in touch with almost like a Indian tradition, right? That none of these words are trademarked, or none of these things are in manuals where you have to do like a copyright like this. And it's such a free flow of these beautiful things that we receive, and it ripples on through us. And that itself is a lot of gratitude, and the nurturing, the field that gets created. Thank you so much for just touching the tip of the iceberg. I guess there's so much more, I'm sure, but still there's so much even in this hour that we touched on around the theme. So thank you for sharing your experiences, Prakhar and Himakshi. It was really lovely speaking to you.